Okay, so welcome back everyone. Noman, I'm sure that I'm audible and the screen is there. Yes, sir. Okay, so Noman, you were mentioning some details and okay. So you have completed your master's in literature and you have served as a CTI college teacher in Chennai. So when you Yes. were there in higher, you have mentioned you have served Higher Education Commission as a CTI. How you can serve HEC as a CTI? I am unable to understand this particular claim made by you. I'm sorry, it was slip of tongue. I have to say higher education department. Okay, I'm sorry. that's fine. Oh, No worries about that. So what is the basic meaning of your name, Noman? And you have mentioned Qadri as well. So what is Qadri? sir, the name and the Qadri is associated with Hazrat Abdul Qadir Jilani. So that's Fair all enough. about. Yeah. The Qadriya Silsila is there. Abdul Qadir, Sheikh Abdul Qadir Jilani is there. By the Yes, way, Abdul Qadir Jilani was from which country? Because it from is a part Baghdad. of your name, so I'm sure that you have explored the detail. Yes, he was from Baghdad, Sharif. And Baghdad is where? In which country Baghdad is there? Um, sorry, sir. Okay. So talking about Silsila Qadriya, in how many countries this Silsila, this whole Qadriya, the very things they move on. So in how many countries this order is still existed, included Pakistan? So in Urdu, we are definitely going to call it the Silsila, but in English, the order is there. So in how many countries we have the Qadriya? The Qadri Sir, order is there. Sir, I didn't explore too much information regarding Silsila Qadriya. What I know, I told you. Sir. Okay, thank you so much. You have told us, but you requested to definitely explore the details about Sheikh Abdul Qadir Jalani because that is the part of your name. Sir, Talking about you, yeah, sir, please. sir, actually, I don't want to associate myself too much religious scholars, so that's why I didn't explore. But how you're going to justify the part of your name? The name is the last name of my Asti, which is associated with one of the martyrs of Karbala, whose name is Hazrat Muslim bin Osja Asti. So I associated my name with them because the name was set by my grandfather. So Okay, fair enough. Talking about your district, you have mentioned Rahim Yar Khan is there. Rahim Yar Khan. So, gentlemen, how many? Yeah, you want to say something? yes, yes, I belong to a district Rahim Yar Khan, one of the tehsils of Rahim Yar Khan, which is Liakatpur. How many total tehsil are there in Rahim Yar Khan? Sir, total tehsils in Rahim Yar Khan, there are three. The first one is Tehsil Rahim Yar Khan, and as well district, uh, Tehsil Khanpur, and last one Tehsil Liakatpur, in which I am living. What is the famous about Liakatpur? Sir, the name of Liakatpur, the old name of Liakatpur was Cho Dari. It means 4 doors. And in 1950, our first Prime Minister, Chaudhry Liaquat Ali Khan, visited in Liakatpur, and he got martyred in Rawalpindi in 1952, I think. And after after he got martyred, the Liakatpur is named as after his death as Liakatpur. Okay, what are the spelling of martyr? You have used this word twice. What are the spellings? Can you spell it out? You have used martyred.
So martyr is the good pronunciation. So I need the spellings. MYRTORD. So are you sure about that? Right, sir. Yeah, you have used the very word martyr about Liaquat Ali Khan. So what are the spellings? MYRTORD. Okay. Well, gentlemen, maybe you need to explore it later on. What is the difference between talking about the Liaquat for Kachi Mandi and Pakki Mandi? Yes, sir. In Pakki Mandi, there is grain market. We can say Jaggery market, which is very famous, and we can say most of the articles, things we can have in Pakki Mandi, and there is less infrastructure in Kachi Mandi. Mostly there are KLP Road and Shahi Road in Kachi Mandi. There is bus station in Kachi Mandi and the railway station. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. Railway. Thank you so much. Talking about your basic degree name, that is linguistics and literature. You have mentioned that you have completed your degree from Islamia University of Bahawalpur, but there was an affiliated college. So my question is, gentlemen, what is the basic definition of literature? Sir, a written sum of work, it can be written or oral, is regarded literature. Okay, if it is literature is written or oral. Okay, fair enough. Yeah, that's true. So what is the name of your favorite writer that you have prepared for today? Sir, Christopher Marlowe. But if let's talk about another writer, Christopher Marlowe. Just leave Christopher Marlowe. Let's talk about William Shakespeare. So what do you know? How many total plays William Shakespeare has written so far? I'm sorry, sir. How many plays William Shakespeare has written so far? How many plays William Shakespeare has written? Yes, he wrote, sir, 37 plays. You said she wrote. He I'm wrote, talking sir. about William Shakespeare. No, sir, Okay. he wrote. Actually, I have flu problem as well, sir. Okay, all right. So, gentlemen, can you mention the name of some romances written by William Shakespeare? Romances. Tragedy comedies. The names of tragedy comedies written by William Shakespeare. Yes. Merchant of Venice, The Fair Tempest, okay. And The Winter Tales. Actually, I didn't study much about Shakespeare, but I had studied only 3 or 4 his comedies. Okay, tragedies. Because you have read Christopher Marlowe. When we say no Marlowe, no Shakespeare, what is the meaning of this statement? No Marlowe, no Shakespeare. Yes, actually, before Christopher Marlowe, Earl of Surrey introduced blank words in English literature. Fair enough. And Marlowe made it very easier for the upcoming playwrights or dramatists, and he used blank words in a way that it was. What was the pen name of the Christopher Marlowe, Numan? What was the pen name? Sir, he is also regarded as Kit Marlowe. And who gave him this name? He himself implied this name for himself. I think his contemporaries maybe given this name to him. You know, Marlowe achieved reputation for blank verse. What is the definition of blank verse? Yes, it is used in poetry in which there is no rhyme scheme, but meter is always there. Fair enough. Gentlemen, humanism is one of the major theme of the Elizabethan age, and Christopher Marlowe was also working on the same theme.
What do you mean by humanism? What is humanism? Yes, in Middle Age, we studied. There was a lot of literature produced, sponsored by church. Only morality play, Mhm. only mystery plays, miracle plays, and man was Mhm. in passive. Man was not in action. And Okay. after Middle Age, there is came of revival of old literature, mean Greek or Roman literature, and man became the center of the universe, and he became the subject matter of that time. So man discovered universe and many scientific discoveries, and the dramatists started to write about man, because man is made for this world, and this world is made for man. So I think, as Alexander Pope says, that the proper study is of mankind. So I think The that proper was study of what is mankind, what Alexander Pope says. the proper study of uh, humankind is man. Are you sure about this, the quotation that you're quoting? Yes, I think You're sure about that, Numan? I think he said Mm-hmm. the proper The proper study of. study of man is mankind. This is what you are saying. I There is maybe disordering here. Okay. The complete quotation is, know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. So can you just give me the meaning of the very first and the second line? Know then thyself, presume not God to scan. What Pope is talking about by not scanning to God? I'm sorry, sir. Okay, gentlemen, he's talking about that you do not need to look towards the sky. Okay, you do not need to go on, and the proper study of mankind is man. That in case you want to understand the humanity, you will have to look on the man that is the center of the universe. There is no God as per Alexander Pope. They were talking about that if you want to understand humanism, you need to focus more and more on man. That is the reason whatever they were producing, their focus was man. Okay, Okay. let's leave this question. Gentlemen, you have mentioned Christopher Marlowe is your favorite writer. Fair enough. I'm sure that you have watched the performance, the cinematic version, the adaptation of Dr. Faustus or any other play of Christopher Marlowe. So have you watched any performance, any cinematic Uh, version, any dramatic version? I didn't watch any semantic adaptation of Christopher Marlowe, but I watched Anonymous, in which Christopher Marlowe, Ben Jonson, and Shakespeare uh, can be seen. The name of movie is Anonymous, in which there is a presentation of Shakespeare as a Earl of Southampton, in which it is presented that Shakespeare was actually another person. Queen Elizabeth was not liking poetry, and that person hid his identity and gave his all place to an uneducated person whom the world is remembering as Shakespeare. So I only watched that adaptation and no other adaptation Okay. on. Okay, Numan, what do you feel if you are in your class and suddenly for example, just for the sake of illustration, you are assigned the FA, or the intermediate class, and you're supposed to teach English there. But when you enter in the classroom, the students, they are singing, they are on their benches, they are creating a chaotic situation. So how you're supposed to teach them? What you're going to do there? Uh, Sir, first of all, I will have to look at the whole scenario, why they are Mm-hmm. creating, why they are making noise in the class. I will have to Mm-hmm. remember who was the last teacher who taught them, and why they are. Maybe I forget. There is editorial tutorial day for students at that day. Maybe teacher has said that there will be no other class
so that's why they can make noise in the class. And further, Mhm. to know about why they are making noise, I can meet a class Okay, fair enough. representative. I'm just interested in your teaching methodology, how you're going to teach them in this situation, how you will calm down them, how you will say, okay, stay relaxed, and how you will teach them. So basically you have 40 minutes lecture in front of you. So you are supposed to do all the things in 40 minutes. So divide these 40 minutes in this scenario and just apply like how you're going to teach them. Sir, the methodology I always adopt while teaching, whether in FA or in BS classes, I divide my time into two halves. Two halves. Okay. In the first half, I used to teach them, and I tell them earlier when I entered the class, I told them, I will teach you half of the lecture, and the rest of the half we will discuss about the things you like. For you can ask me question, you can recite the verses of Holy Quran, you can recite Naat Sharif, you can singing as well. So I think this is a very Okay, thank you so methodology. much. Numan, some rapid fire question. You're just supposed to answer in a single word. Annual system or the semester system? Annual system. Annual system. Okay. Practical marks that we are giving to the students, like 30 marks in every exams for physics, chemistry, bio, at matriculation and intermediate level. This practice is right or wrong? Wrong. Okay. Every teacher has a right of 2 casual leave. So what do you feel? 2 casual leaves are sufficient or not? I think not sufficient. Okay. Thank you so much, gentlemen. It was a wonderful discussion, and let me give you a review, a feedback. So overall, the interview was a fantabulous interview. Your grip or your introduction on the area like Rahim Yar Khan and Liakatpur, and especially the inside details of the Kachi Mandi and the Paki Mandi, that is basically the specific questions related to your Tehsil. Because I've been there, so I know some things, that are associated with your Tehsil. That's very good. All right, you've been there in a college as a CTI, so you need to prepare some questions like how you control the students, and you need to maybe relate the answers with the scenario that we have discussed. Overall, your grip or literature is fine, but if we just move away from Christopher Marlowe, it sounds that you are shattered and your confidence is shackling there. So you need to have a backup writer as well, in case they're not going to talk about Marlowe. Maybe you need to talk about Ben Jonson, Edmund Spencer, or any other writer. Okay, sir. You need to go through some basic details like the spellings we were talking about. You could not spell it out, and martyr was actually, it is M-A-R-T-Y-R. I think that you pronounced it wrong. The spellings were not up to the mark. You need to remain confident, and in case you feel that the good spellings, the correct spellings are not there, you, instead of going for the wrong spellings, you may say like, sir, right now I think that these the spellings are not with me. I will not be able to answer this question. I'm sorry for that. Because giving wrong spellings, and that too of a very basic words, that's, I think that's injustice here at this level. You need to go on and talk about the pen name and the reasons, like why Kit, and you need to talk about the blasphemous charges or Christopher Marlowe. You need to revisit some teaching methodologies. Why teaching methodologies? If you are going to control this situation, then how Suggestopedia is the wonderful method for that, or the audiolingual method is the wonderful one. Semester system or annual system. If semester annual system is wonderful, as you have mentioned, then why Harvard, Oxford, and all the universities in Pakistan, they're following semester system? Maybe this question is going to give you the tough time, so you need to change your priorities here. Okay. Then yes, this question is up to the mark, that it's a wrong policies, and 2 casual leaves are more than enough.
maybe you need to take a positive stance here. You need to prepare your 5 strengths, why they should select you, and 5 weaknesses as well. Overall, if we rate you from on the basis of this interview, you are not going to exceed 66 or 68. So you need to work really very hard on your favorite genre, on Christopher Marlowe and all these things, because you need to be somewhere on 73 or 74 if you want to get your 6 seats for sure there. Okay, sir. Okay, sir. So this is something that is important about your interview. I'm sure that you have learned a lot, many things. So we have Ghulam Mustafa's question. Ghulam Mustafa, you have raised your hand. Please go on and ask your question. Numan, you have raised your hand. You are requested to go on. Okay, I'm assuming that you have raised your hand mistakenly because I have unmuted you. Yeah, please go on, Ghulam Mustafa. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Numan. Sorry, Ghulam. How are you, Ghulam Mustafa? मैं गुलाम मुस्तफा जी सर, मैं गुलाम मुस्तफा बात कर रहा हूँ सर। मेरा कल इंटरव्यू हो गया था, तो मैं कुछ ना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ इन लोगों से, ताकि इनको कुछ थोड़ा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करने ही वाले थे, कल हमने मोहसिन से किया था और आपसे जो है हमने बल्कि जरूर शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपने आज का भी सेशन लिया कि कितनी क्लासेस जो हैं जो एक्चुअल इंटरव्यू जिनका होने जा रहा है इनके लिए मुआवन साबित हो सकती हैं। मॉक इंटरव्यूज कहाँ तक हेल्प आउट करते हैं, और जरूर इन तमाम चीजों को एक हॉलिस्टिक व्यू जो है वो शेयर कीजिए पार्टिसिपेंट्स के साथ। जी सर। सर जो मैं स्पेशली बात करूंगा जो फैसलाबाद में जिन लोगों के इंटरव्यू उनके लिए। जी जी जी। तो सबसे पहले तो सर ये बात है कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं, अगर आपसे पहले बैच चल रहा है तो आप पता करवा लें कि वो कौन से एरिया के, क्योंकि 2 जो एसएस है ना, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो स्पेसिफाइड होते हैं सर, वो अबाबे होते हैं, वो अपने एरिया से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आवाज का इशू आ गया है गुलाम मुस्तफा, अभी बिल्कुल ठीक थी। अभी जो आपने, हाँ अभी बिल्कुल ठीक हो गया दोबारा से। आप जब बता रहे थे कि वो सीनियर होते हैं, वो बाबे होते हैं, ये शायद मैं ये समझ पाया। जी सर, मैं कह रहा था कि उनका वो अपने एरिया से नहीं निकलते। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा का प्रोफेसर है, तो वो आप जितने भी ट्राई कर लें आपको वो वहीं लेके जाएगा। आप नॉवल पे बेशक रोए पीटे कुछ करें, आपको उधर नहीं लेके जाएगा। और कोई अगर पोएट्री है तो वो वहां लेकिन पे चेयरमैन को तो हम लेके जा सकते हैं ना, चेयरमैन साहब को तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सर। ऐसे और ना यहाँ पे सर 2 प्रोफेसर हैं फैसलाबाद में, एक पोएट्री का है और एक ड्रामा का है। वहाँ पे नॉवल की बात ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। कोई शॉर्ट थोड़ा सा पूछते हैं, तो मैं अपना ये टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सभी का मैं जरा शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। सर मैं गया तो उन्होंने जाते ही चेयरमैन साहब ने मेरे से कहा कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने जैसे आपने समझाया था कि ज्यादा नहीं करना, अपना बताना है कि नाम बताना है, फादर का नेम बताना है, उसके बाद अपने डिग्री पे जाके बता देना कि अभी आप क्या कर रहे हैं। बस मैंने ऐसे ही उसी को फॉलो किया। तो उसके बाद ना उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्हें मुझे ना SS1 पे रेफर कर दिया। तो उसने जाते ही सर वो ग्रीक में चला गया। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन, तो अरिस्टोटल। तो वो मैंने बताया कि ये पोएट्री की थ्योरी है, और उसने ये प्लेटो ने रिपब्लिक में उसको पोएट्स के अगेंस्ट किया था, तो उसने इसको टेबल के साथ किया था, टॉयज रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको एक क्रिएटिव प्रोसेस कहता है। ठीक है, ये इस तरह करके उसको मैंने सर बताया दोनों। उसने फिर रिपब्लिक पे चला गया, उसके बाद फिर उसने ये जो पोएटिक्स है ये डिस्कस की, ट्रेजेडी उसने डिस्कस की। तो मतलब उसने ग्रीक में काफी सर मेरा जोर लगाया उसने। शुक्र है मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन ओवरऑल मेरा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं था, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं उस पर काम नहीं कर सका। काफी ट्राई में मैंने की, लेकिन जब जारी बात इतने शॉर्ट टाइम में कहाँ होता है। तो बहरहाल मैंने अपनी तरफ से जो नॉलेज मुझे चीजें आती थी, लेकिन मुझे कन्वे करना नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो बहरहाल उसके बाद सर वो चला गया। उसके बाद ना उसने पूछा हु इज योर फेवरेट पोएट। तो सर मैंने किड्स बताया। तो उसने फिर मेरे से किड्स नहीं पूछा, तो उसने ना डायरेक्ट चला गया। उसने कहा कि जेंटलमैन आपने कौन कौन से नावल पढ़े। तो मैंने बताया सर
मैं हार्डी मेरा फेवरेट था, तो मैंने हार्डी के बताने शुरू किए। तो उसने कहा नहीं आप ना पोस्ट कॉलोनियल में मुझे बता। तो फिर ठीक मैंने है। वहां पे थिंग्स फॉल अपार्ट बताया। तो उसने कहा कि आपने रिडक्शन फंडामेंटल्स पढ़ा है? मैंने कहा जी मैंने पढ़ा। तो उसने जो जो मतलब वो मेरे से सर पूछ रहा था कि मैं जो कह रहा था कि ये मैंने पढ़ा, उससे वो नहीं पूछ रहा था बिल्कुल भी। तो फिर उसने फिर उसका मुझे ये फायदा हुआ कि जो दूसरे क्वेश्चन कर रहा वो बहुत जनरल कर रहा था। फिर उसने सर मेरे से कीट्स के बारे में पूछा कि who was beloved of John Keats, ये उसने पूछा। मैंने कहा फनी ब्राउनी। फिर उसने कहा कि did she desert her or he desert her? तो मैंने कहा nobody desert anyone, and Keats said goodbye to him because he was going to die because of tuberculosis. मैंने उसका ये आंसर किया। तो फिर उसने कहा कि जी आप, उसने ये लाइन बोली थिंक ऑफ ब्यूटी, नहीं ये कहा था उसने, ट्रुथ इज अ ब्यूटी, ब्यूटी इज अ ब्यूटी ट्रुथ, दैट्स आर यू, ये वाले। उसने कहा ये कौन सी पोएम की है? तो फिर मैंने बताया कि ये है ओड ऑन ग्रेशन अर्न। उसने कहा अच्छा इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी है इस पोएम की? फिर मैंने वो बताया, ओ दाओ ऑन रैविश ब्राइड ऑफ साइलेंस, ये वाली मैंने लाइन, ये मैंने याद की थी। आपके कहने पे मैंने ना अपने ये लाइनें मैंने काफी याद कर ली थी। फिर उसके बाद सर वो चला गया। उसने कहा कि आपने शेक्सपियर के, वो क्योंकि ड्रामे का बंदा था तो उसने शेक्सपियर पे बहुत उसकी कमांड थी। तो उसने कहा कौन कौन सा आपने ठीक है। पढ़ा है शेक्सपियर के बारे? तो मैंने कहा सर मैंने हैमलेट पढ़ा है, मैंने ओथेलो पढ़ा है, मैंने किंग लियर पढ़ा है, मैंने ट्वेल्थ नाइट पढ़ा है, मैंने कॉमेडी ऑफ एरर, मैंने काफी सारे प्ले समरी मतलब पढ़ी हुई थी, मैंने सारे उसको गिन के बता दिए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा आप कंपेयर करें ओथेलो को हैमलेट के साथ। तो मुझे ये एसी ब्रैडली वाली बात मुझे सर आपने पढ़ाया था। मैंने कहा कि ही इज एज पर द एसी ब्रैडली ही इज द मोस्ट रोमांटिक हीरो एंड मोस्ट इनोसेंट, ओथेलो के बारे में बताया। और उसको टीएस इलियट का मैंने रेफरेंस दे दिया कि उसने उसको, टीएस इलियट ने उसको बता दिया था कि ये आर्टिस्ट फेलियर है, इस तरह का। और वो वेरी जो है गुड। अपना डिसीजन में मतलब इतना डिसीजन नहीं लेता, हमेशा डाउट्स में रहता है अपने फादर की रिवेंज के वाले से। और वो बड़ा डिटरमिनेट है, वो जो डिसीजन लेता है उस पे ना वो इस हमेशा आंसर कायम के रहता है। बाद इवन जो के है वो आगे उनके उसके इतने एक्सप्रेशन कैसे थे जब आपने कोट किया इन दो बड़े नामों को, इसी ब्रेडली को किया, टीएस इलियट को किया? तो डू यू फील कि वो आप उन्हें इम्प्रेस कर सके? बिकॉज ये जो नाम आपने इस्तेमाल किए ये बड़े, बहुत बड़े नाम हैं, इसी ब्रेडली और जो है वो टीएस इलियट जो है। सो इसके बाद उनका एक्सप्रेशन कैसा था जिन्होंने ये आंसर आपसे लिया? बिल्कुल सर, जब मैंने ऐसे आंसर दिए वो चुप कर गए थे। नॉर्मली वो जब मैं बोल रहा होता तो बीच में मुझे रोक लेते थे, बात मुकम्मल ही नहीं करने देते ना। एक ऐसे ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा था कि और चेयरमैन चुप रहा है सारी डिस्कशन में, और एक ऐसे वन और ऐसे इकट्ठे सर क्वेश्चन उन्होंने किए। ये नहीं हुआ कि एक बंदा अच्छा। एक कर रहा है फिर उसके बाद नहीं शुरू हो गया, एक ये कर रहा है उधर, इधर से क्वेश्चन इधर, और उन्होंने कंफ्यूज मुझे करने हर की एरिया कोशिश में कर रहे घुमाया। थे। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मैं बीच में कंफ्यूज भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरे से ना सर ये पूछ लिया था पोएट्री के मीटर की, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी। तो इस पे मैं सॉरी कर रहा था। हम्म। तो फिर उसने, उनको पता चला कि ये हालांकि ये पोएट्री में हमने वीक है। आपको भेजे हुए हैं ये सेशन भी, लेकिन जी आप जी शायद सर देख नहीं बिल्कुल। सके। जी सर आयम्बिक वो, पेंटामीटर और जो दूसरे हैं जी सारी हालांकि चीजें भेजी बेसिक्स हुई थे, इतने मुश्किल भी नहीं थी, हैं। पर मुझे ये चलिए नहीं कोई आते बात थे। नहीं है, इंटरव्यूज में क्वेश्चन स्किप करना जो है वो जी खुदा न खास्ता फेलियर की अलामत नहीं होता है। आंसर्स को करना, और चेयरमैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो डेफिनेटली चेयरमैन इज हैविंग द जी कास्टिंग सर। फिर वोट। उसने, हेलो उसके जी बाद सर फाइनल ये मैं पावर वाइंड अप होती कर है। रहा हूँ। जी सर फिर वो ना, फिर वो डन पे आ जाता है। डन पे आया, उसने कहा कि हैव यू रेड डन? मैंने कहा जी सर। डू यू नो हिम? मैंने कहा यस सर। तो उसने कहा कि जी क्या आप उसके बारे में जानते हैं? मैंने कहा ही इज अ मेटाफिजिकल एंड ही इज फ्रॉम द प्यूरिटन एज। तो फिर उसने कहा कि अच्छा क्या आपको लगता है कि डन जो है वुमेन को फेयर वे से ट्रीट करता है? मैंने कहा इन सम केसेस ही वर्शिप them, in some cases he detests them। उसने कहा कैसे? तो मैंने कहा वो एग्जांपल दी, गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार, ये वाली उस पोएम की। मैंने कहा कि वहां पे वेरी बड़े वो गुड। कहता है कि wherever you want to go you will not able to get a fair woman। तो उसने कहा फेयर? मैंने कहा नो सॉरी फेथफुल woman। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर सर उसने और काम मेरे से क्या पूछा, हाँ एक और उसने पूछा कि ये जो मार्लो का क्वेश्चन, मार्लो का प्ले डॉक्टर फास्टर साहब ने बताया कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये बताया कि ये मिस्ट्री प्ले है या मोरालिटी प्ले है? तो मैंने कहा कि ये मोरालिटी भी है और मिस्ट्री भी है। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा कि इस तरह से, क्योंकि इसमें ना सिन है, सिन की आर्चिटाइप्स हैं, जैसे वो है मेफिस्टोफिलिस है, ल्यूसीफर है। तो ये इस तरह करके ना ये दोनों सिन में, तो इस वजह से ये मिस्ट्री बन रहे हैं। तो अगर हम ठीक है। देखें तो एंड पे एपिलॉग पे वो उस पे उसको मॉरल लेसन दे रहे कि आपने इसको फॉलो नहीं करना, तो ये इस वजह से ये मोरालिटी भी बनता है। तो एज पर माय ठीक ओपिनियन है। ये मोरालिटी भी और मिस्ट्री भी, इस तरह इसको मैंने सर डिफाइन किया था। बहरहाल मेरा कम्युनिकेशन लेवल सर बहुत वीक रहा,
इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, मुझे हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट जवाब आता था। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग ना डेली बेस पे अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी फैमिली में किसी को बिठा को बेशक आप क्वेश्चन लिख के दो उनको, और मोस्टली तौर पे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो कंपेयर करवाते हैं करेक्टर को। वहां पे कम्युनिकेशन आपका लेवल होता है कि आपको अंदर से रट्टी रटाई चीजें नहीं होती, तो इसकी प्रैक्टिस करें सबसे ज्यादा। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं रहते, जनरल जनरल क्वेश्चन होते हैं। आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे कॉन्फिडेंस चेक किया लेवल जो जाता है, है वो नॉलेज वगैरह हेल्प कुछ आउट भी नहीं करता चेक है। होता। और गुलाम जी, मुस्तफा, मेरा जब आपने कम्युनिकेशन लेवल जी सर। वो सेशन अटेंड किया था तो क्या ये कम्युनिकेशन को हाईलाइट किया था? मैंने भी बताया था कि इस पे ज्यादा जी वर्कआउट सर, करने की आपने डे जरूरत है। वन से, जी आपने डे वन से जब मैंने आप मतलब कॉल की थी उस दिन भी आपने मुझे कहा था कि बेटा आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत मैटर करता है, इस पे काम। मैंने सर बड़ी ट्राई की थी, पर अब क्या करें, इतने नो शॉर्ट वरीज। टाइम में मैं, खैर, हालांकि मैंने आपने अभी बहुत, जो है जी जो सर। दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, जो बात मैंने अभी तक आपकी सुनी है और जिन क्वेश्चंस को देखा है, इफ यस दे गिव सम सपोर्ट एंड नॉट सम सपोर्ट इन दिस केस, दे गिव जी एम्पल सर। स्पेस टू द कम्युनिकेशन लेवल, बट जो आर्ग्यूमेंट्स आपके हैं, जी चेयरमैन जो सर। होते हैं ना, ये बेसिकली उन्होंने नंबर जो है वो हाफ नंबर उनके पास होते हैं, 25-25 जी दोनों सर। के पास होते हैं। अगर तो जी सर। चेयरमैन आपकी पर्सनालिटी को डीपली एनालिसिस कर गया तो वो जी फिर इस फैक्टर को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है? जी क्योंकि सर। जो जी आपने सर। आंसर्स दिए हैं वो सारे के सारे आंसर जो हैं, दे आर डेफिनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बंदे से जिसने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, ठीक है? जी बेटर सर। कैफ, अभी हम जो है इस स्टेप पे गुड लक विश कर सकते हैं आपको, और मुझे वैसे यकीन है आपको इतना दिल छोटा करने की अल्लाह जरूरत खैर करे। नहीं है कम्युनिकेशन के हवाले से जो है। जी और सर। इंशाल्लाह जो हैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई एम श्योर कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग। और मॉक इंटरव्यूज में हम जो क्वेश्चंस गुलाम मुस्तफा पूछते हैं, अगर कोई ढंग से यहाँ पे आंसर दे लेता है, मेरा ख्याल एक्चुअल इंटरव्यू ने फिर मुश्किल नहीं सर लगता होगा। मैं कहता हूँ उसके लिए ये हलवा लगेगा वहां पे जब जाएगा, तो उसको तो लगेगा कि हम्म। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जैसे आप लेते हैं ना सर, बहुत आप अच्छे वैसे। और एक और हॉबी के वाले से उन्होंने मेरे से पूछा था यार, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी हॉबी, मैंने कहा बुक रीडिंग, तो इंग्लिश की तो काफी डिस्कस हो चुकी थी, मैंने कहा चलो मैं जरा आर्ट की, क्योंकि मैंने उर्दू की सर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो मैंने ठीक है। कहा कि जी मुझे ना उर्दू में मतलब उर्दू में मैंने कहा कि मैं नॉवल में और फिलोसफी में ना ग्रेट। उन्होंने कहा जी हम्म। आप बुक्स के नाम बताओ। फिर मैं शुरू हो गया, सिर्फ तसन को, अली अब्बास जलालपुरी, बाबा याह्या खान, अशफाक मोहम्मद, बातें कुदसिया, उमैर अहमद, ये जितने जितने भी मैंने पढ़े हुए थे सर, मैंने उनकी बुक्स के नेम शुरू हो गए, तो काफी कुछ वेरी गुड। 20-25 मैंने नेम बताए थे। फिर उस उन्होंने कहा आपका कि जी इंटरव्यू आपका कितनी फेवरेट देर राइटर, चला था? अराउंड वो कुछ 12 से 15 मिनट हो गया, इतना था। वैसे आपको जी काफी सर। होपफुल रहने की जरूरत है। जब कभी मेरा इंटरव्यू था कमीशन के साथ, देयर वाज अराउंड 16 मिनट्स, और एंड आई स्कोर्ड 78 मार्क्स इन माय इंटरव्यू, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि इतना इंटरव्यू जो है, इफ दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन अ पर्सन, तो उसे 3-4 मिनट में फारिग कर देते हैं, ठीक है? तो ये हाँ, खैर उन्होंने बहुत मेरे अच्छी से तो बात है कि बहुत आपका पूछा, इंटरव्यू उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हर रहा। एरिया में जाके पूछा। मेरा मैं कहता हूँ काश मुझे बोलना आता होता ना सर, यकीन मानिए, तो शायद मैं टॉप भी कर जाता, जितना बस मुझे ये हमें चीजें। टाइम थोड़ा कम मिल दे सके आप, गुलाम मुस्तफा। बस अगर सर थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम मिलता सर, तो I'm थोड़ा श्योर कि टाइम ये बहुत था आपका इस ये वजह से, एरिया भी बहुत काफी अच्छे शुक्र। से हम कर देते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली भी रिकमेंडेशंस देते रहते हैं आपको और जी जी बाकी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को भी। ऐसे सर, ऐसे ऐसे मुझे चलें, बड़ा अपना याद है बहुत सर, सा ख्याल आपने कहा रखिए। था कि मुझे, थैंक यू सो मच सर। हम्म। और ये सभी लोग जो है हॉबी में अपने बुक्स के नेम, और खास तौर पे सर जी करें जो इनका एरिया है ना, उसके जो बाकी उनका हम्म। हल्का हल्का पढ़ लें। और मजे की बात ये है कि जब वो एरिया से बाहर निकलता है आपके लिए फायदा है, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन करता है। जब आपके एरिया में जाएगा तो बहुत डीप पूछेगा, जब एरिया से निकलेगा जी तो आपके अच्छा। फायदे के लिए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप घबराना नहीं है, बस उसको तो हर चीज को, हिस्ट्री को रिवाइज कर ले, सारी चीजों को ग्रीक से स्टार्ट करें और बाद पोस्ट कॉलोनियल तक वो नहीं छोड़ता सर, हर चीज पूछता है। थैंक यू सो चले मच सर। गुलाम मुस्तफ़ा के लिए, और कि इन्होंने टाइम भी निकाला, इन्होंने सेशन भी अटेंड किया और आज इन्होंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आई एम सो हैप्पी कि ऑल द मेंबर्स हियर एट एमओसीसी, दे जस्ट लाइक ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और इन्होंने इतनी केयरिंग वे में आपको गाइड भी किया। और जब वो गाइड कर रहे थे, आई वाज फीलिंग कि जैसे और इनफैक्ट आपने भी फील किया होगा कि आपको वो एक फैमिली मेंबर समझते हुए, दर्द रखते हुए आपको वो बता रही हैं कि इस तरह से करना है, ये वाली चीज़ें जो है वो करनी है। और मैं ये समझता हूँ, ये खुशकिस्मती है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आपके फेलोज इतने अच्छे हैं जो गाइड भी कर रहे हैं, जो सीनियर्स भी हैं। यकीन कीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं पर बैठे हुए हैं ना, तो उनके पास वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया,
ना उनके पास वो लोग हैं कि जिनसे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, कैसे मूव ऑन करना है। तो मुझे यकीन है कि आप इन तमाम फैसिलिटीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और द बेस्ट एफर्ट करेंगे। सो होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो, और जो कल के इंटरव्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह उनकी लिस्ट आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। Thank you so much everyone for being with us and hope to see all of you tomorrow. Khuda Hafiz.